वेलकम बैक टू लीगल विद्या एंड आज के इस वीडियो में विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ क्रिमिनोलॉजी। अगर आपको इस पर रिटन नोट्स चाहिए डू विजिट आवर वेबसाइट www.legalvidhiya.com जिसका लिंक आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम जानेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी, various definition given by various criminologists and jurists. Then we'll learn about the nature and scope of criminology, and lastly we'll see the importance of criminology. So let's begin. What is criminology? तो criminology word जो है it has been originated in the year of 1980. It has its origin from two Latin words, that is crimen and logia. Logia मतलब logic and crimen मतलब accusation. So simply if we put it together, criminology can be understood as the scientific study of crime as a social phenomenon, as criminal and penal institutions. क्रिमिनोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा रोल परफॉर्म किया है इन मेकिंग ऑफ क्रिमिनल justice system in various states. Its findings have influenced legislators, judges, prosecutors, lawyers, probation officers, and prison authorities, promoting them to better understand crime and criminal ki mind and to develop better sentences and treatment facilities for the criminal. So this is one of the importance of criminology कि criminology ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है in our criminal justice system, and because of this particular subject many judges, legislators, prosecutors, lawyers and जो भी basically criminal justice में involved होते हैं, they all have they all have understood the crime better and also understood the minds of criminals better, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा better treatment facilities बन गई है for criminals. Let's have a look at various definitions of criminology. पहले तो Sutherland, he gave a more comprehensive definition of criminology and defined it as the body of knowledge regarding delinquency and crime as a social phenomena, and it includes within it the process of making laws, breaking laws, and of reacting towards breaking of laws. तो बेसिकली सदरलैंड की डेफिनेशन के थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स है: द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ब्रेकिंग लॉ एंड द रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग लॉ. प्रोफेसर गिलन ने भी डेफिनेशन दी है क्रिमिनोलॉजी की, एंड it has rightly stated that it is not the humanity within the criminals but the criminality within the humans that needs to be cured through effective administration of criminal justice. This interdisciplinary field of study, that is criminology, seeks to discover the cause of criminality and suggest remedies to reduce the crime. कोलमैन एंड नॉरिस, इन्होंने भी क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन दी है विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दे हैव स्टेटेड दैट क्रिमिनोलॉजी इज द एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ क्राइम, perpetrators of crime, cause of crime, formulation of criminal laws, and law enforcement and the control of criminal behavior. Basically इनके डेफिनेशन के एलिमेंट्स हैं: nature of crime, perpetrators of crime, that is the delinquents and the criminals, the cause of crime, that is किस वजह से crime हुआ, formulation of criminal law, that is criminal laws कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, उनकी ज़रूरत क्या आई है, law enforcement कि वो enforce कैसे किया जाता है, and the control of criminal behavior कि कैसे crime rate कम किया जा सके. Professor Kenny has defined criminology as the branch of criminal science which deal with crime causation, analysis and prevention of crime. तो बेसिकली अभी तक हमने जितने डेफिनेशन पढ़े हैं उन सब के कॉमन एलिमेंट्स है कि इट डील्स विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि क्राइम क्यों कॉज हुआ, क्राइम कैसे कॉज हुआ, व्हाट वाज द रीज़न, एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट सच फ्यूचर क्राइम्स. आगे हम लोग नेचर एंड स्कोप के बारे में जानते हैं. सो ब्रॉडली क्रिमिनोलॉजी डील्स विथ लीगल साइकेट्रिक एस्पेक्ट और मेडिको फिजियोलॉजी, biological, pedagogical, or sociological aspects of criminality and the factors related therewith, and thus it seeks to study the phenomenon of criminality in its entirety. इसका मतलब ये है कि क्रिमिनोलॉजी ब्रॉडेस्ट सेंस में पूरे क्रिमिनल साइंस को ही कवर करता है, इंक्लूडिंग सेंटेंस, पनिशमेंट, लॉ, प्रोसीजर, रिहैबिलिटेशन, क्रिमिनल डिटेक्शन एंड एनीथिंग जो इसकी तरह है. क्रिमिनोलॉजी को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज थियोरेटिकल और प्योर क्रिमिनोलॉजी एंड द सेकंड इज अप्लाइड और प्रैक्टिकल क्रिमिनोलॉजी. सो फर्स्ट विल सी अबाउट प्योर क्रिमिनोलॉजी और थियोरेटिकल क्रिमिनोलॉजी. तो प्रोफेसर W.A. Bonger,
ही प्रिफर स्टडिंग थियोरेटिकल क्रिमिनोलॉजी अंडर द फॉलोइंग सबहेड्स. तो इसके काफ़ी सारे, बट दीज आर द मेन सबहेड्स. द फर्स्ट इज क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी. दिस सीक्स टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर इन फिजिकल टर्म्स. तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग फिजिकल टर्म्स में उनकी पर्सनैलिटी जानते हैं. Caesar Lombroso. He was a criminologist and was the first to propound this view, and he emphasized on explaining criminal behavior in terms of the physical characteristics of the offender. That is, physical characteristics मतलब उसका build कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसके expressions कैसे हैं, उसके face कैसा है, उसका body कैसा है, इन सबको deal किया था उसने criminal anthropology में. अब sociology. Criminal sociology is based on Sutherland's differential association theory, which tries explaining criminal behavior as a process of learning through association with other criminals. जैसे हम बोलते हैं कि जैसी संगति होती है वैसा ही हम लोग सीखते हैं, संगत से गुण आते हैं, राइट. तो इसमें बेसिकली यही बोला है कि आप जो देखते हो दूसरे क्रिमिनल से, जो सीखते हो वही क्रिमिनलिटी आप अपने अंदर अपनाते हो. देन कम्स क्रिमिनल साइकोलॉजी. It seeks to correlate criminality to emotional aspect of human nature. French psychologist Alfred Binet and Professor German of the USA are the main propounders of this view. So criminal psychology basically deals with the study of mind and everything, right? So criminal psychology deals with criminality तो आपका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. दैट इज आप गुस्से में थे तब आपने क्राइम किया, यू वर इरिटेटेड, यू वर jealous, or what you were feeling because of which the crime occurred. Then criminal psychoneuropathology. Dr. Luke and Freud were the main exponents of this view. This branch of criminality attributes criminality to functional derivations and mental conflicts in the personality of the offender. Then we have penology, which is also a part of theoretical criminology. This concerns with various aspects of punishment and penal policies and the various mechanisms of punishing the offender. Penology नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, it deals with punishments and कैसे offense पे कैसा punishment मिलना चाहिए. Then we have victimology. This branch of criminology is very new and it deals with victims of the crime. Generally हम लोग जो पुराने क्रिमिनोलॉजी था, वी ओनली यूज टू डील विद द क्रिमिनल्स, देयर माइंडसेट, what they were feeling. Now we come to victimology, which deals with the victims of crime. It seeks answers to the question of why and how people fall victim to crime and how they can be helped against the abuse of power or criminal acts of the offender through access to criminal justice. काफ़ी सिंपल है. विक्टिमोलॉजी में हम विक्टिम पे ध्यान देते हैं एंड वी फाइंड आउट कि व्हाट वाज द रीज़न कि इसके साथ क्राइम हुआ एंड हाउ कैन द जस्टिस सिस्टम हेल्प द विक्टिम गेन जस्टिस एंड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम अब्यूज ऑफ पावर. Then the second branch of criminology, that is applied criminology. It includes the study of criminal hygiene and criminal policy, which is founded on solid derivative conclusions. It provides useful material for study and understanding criminal justice administration from point of view of field officers whose main preoccupation is to deal with law and the procedure relating to investigation and the prosecution of crime. तो एक तो है थियोरेटिकल क्रिमिनोलॉजी जिसमें हम थ्योरी की बात करते हैं, देन देयर इज अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं. तो ये बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस कैसे एडमिनिस्टर होता है, उसका प्रैक्टिकलिटी क्या है in the particular state from the point of officers, that is public prosecutor हो गया, then there are judges and especially those who work in prison correctional homes, उनसे डील करता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डील करता है. एंड लास्टली वी कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी. तो ये कुछ पॉइंट्स है विच हेल्प a person understand why criminology is important. The first is that the criminology clears the way of study of social system. The second point is it suggests the way of elimination of criminal instincts in society. Criminology tells us why, the ways of bringing stability in human values. It tries to reform the criminal. The system of study becomes helpful to the investigation officer in researching from the point of crime to the criminal. Crime is a necessary evil and an ailment. Criminology suggests the ways and means on checking this evil. The spirit of social security is created by the way of criminology. तो इन पॉइंट्स को पहले समझते हैं. क्रिमिनोलॉजी क्लियर्स द वे ऑफ स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम. अब सोशल सिस्टम में सब आते हैं, द विक्टिम्स, द क्रिमिनल्स, द people who are prosecuting them, the judges, everyone falls under the social system, that is the society. तो क्रिमिनोलॉजी के हेल्प से आप सोसाइटी को बेटर जान सकते हो.
इट सजेस्ट कि क्रिमिनल जो इंस्टिंक्ट होता है कि इंसान के अंदर कि इफ़ इट इज़ ड्यू टू हिज ग्रज, इफ़ इट इज़ ड्यू टू हिज एंगर, वो कैसे ख़त्म किया जा सके, ये इंस्टिंक्ट कैसे हटाई जा सके. It also helps us bring a human stability in the values, मतलब stability in human values. It tries to reform क्रिमिनोलॉजी का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है क्राइम हो गया, हमने क्रिमिनल के बारे में समझ लिया और बात ख़त्म. नहीं, क्रिमिनोलॉजी का मतलब ये भी है कि जो क्राइम हुआ है, जिसने वो क्राइम किया, दैट इज़ द क्रिमिनल, उसे एक चांस मिले टू रीगेन हिज लाइफ, एंड फॉर दैट क्रिमिनोलॉजी हेल्प्स अस रिफॉर्म द क्रिमिनल. इट बिकम्स हेल्पफुल फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जब आपको क्राइम इन्वेस्टिगेट करना होता है एंड यू हैव एन आइडिया ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यू कैन अंडरस्टैंड द क्रिमिनल्स माइंडसेट, जिसके कारण क्राइम को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है. क्रिमिनोलॉजी काफ़ी हद तक हेल्प करता है इस ईविल को, दैट इज़ क्राइम को चेक करने में, चेक एंड बैलेंस करने में. एंड ऑब्वियसली अगर जो हमारे जजेस है, जो प्रोसिक्यूटर्स है, जो पुलिस है, अगर उनको आइडिया होगा कि क्रिमिनल कैसे काम कर सकते हैं, then the society will feel safe, right? So criminology helps bring the spirit of social security in the people. That's it for this video, that is the introduction to criminology. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में डालिए.